say that we have come out in good flying colors in this. We were able to achieve the objectives that are set out for us. We were able to, make sure that the nation realizes that air power is one of the options that they have and the first responder that they have. The primacy of air power has come to fore again, wherever it was getting lost, in case it was getting lost in some minds. So I think this operation has proved, though I am not a proponent of war, but sometimes occasions like this do tend to get us back on track. It's like, हम सबको पता है कि जिंदगी जीना है, बाकी सच एक है, बाकी सब मिथ्या है, माया है, बट हमारा 95% टाइम वो माया के साथ ही खेलने में निकल जाता है. सच कह रहा हूं ना. तो अगर एक बारी आप दिन में एक बारी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या कोई झटका लगता है जिंदगी में, तब एक बारी सीधे हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर स्ट्रेट चलते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे वो माया में बिखर जाते हैं. तो वैसा ही हो रखा है, बिकॉज जब हमारा काम है लड़ाई करना, हमारा काम है डिटर करना है दुश्मन को, पर कभी कभी जब वो काफी देर से नहीं हुआ होता तो हमें लगता है कि ये बाकी काम भी हैं. यस, बहुत है काम बाकी भी, लेकिन फोकस यहां से शिफ्ट नहीं होना चाहिए. जो हमारा मेन काम है उससे हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए. और ये ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक बार दोबारा से रिफोकस करा है. एंड मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि हम इतने डीफोकस भी नहीं थे कि वी वर नॉट, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट्स है दे वुडंट हैव बीन लाइक दैट. द नेशन वुड नॉट हैव टॉक्ड सो मच अबाउट इंडियन एयरफोर्स, एंड टुडे द एंटायर नेशन इज टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स. रादर मैं ये आज आप सोचोगे मैं ब्लू यूनिफॉर्म क्यों पहन के आया, क्योंकि वो आपने वो देखी है मूवीज, जब वो कहीं ग्रुप डांस वगैरह चल रहा होता है, जो जिसको वो सेंटर में दिखाना चाहते हैं हीरो को, उसको कोई लाल रंग या कोई ऐसा रंग पहना देते हैं शक्ल से. तो मेरे को लगा कहीं मैं खो ना जाऊं भीड़ में, एक अलग से दिखना चाहिए, इसलिए रंग पहन के आया. लेकिन इस रंग से आजकल हमको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया लोगों ने. कहीं पे भी ब्लू दिखता है, कुछ एक चमक सी आ जाती है सबके चेहरे पे. तो ये जो हम कर पाए हैं, ये सब पॉसिबल था क्योंकि हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं, कुछ जो सामने सीटों में बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने जो सोचा और जो फोरसाइट इनमें थी कि क्या चाहिए हमको कल के लिए. क्योंकि लड़ाई हमें तैयारी जो है वो आज की लड़ाई के लिए नहीं करनी, हमने जो आने वाला कल है उसके लिए करनी है और उसके लिए सोचना है. और सिर्फ हम पिछली लड़ाई के लिए के बारे में सोच के और उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो गलत हो सकते हैं. तो वो जो एक फोरसाइट है, वो जो एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेयर द फ्यूचर इज टेकिंग अस, कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या चाहिए हमको, आई थिंक वो आवर सीनियर लीडरशिप विच हैज नाउ joined the gang of veterans, I think they deserve a big round of applause. All of you all, we are so indebted to you all that you all guided us on the correct path. And बहुत सारी चीजें जो हमने यूज करी, जो वेपन्स, जो सिस्टम्स, वो इन रिसेंट ईयर्स में हमने एक्वायर करे थे या ऑपरेशनलाइज करे थे या इंटीग्रेट करे थे. एंड काफी कुछ उसमें से इंडिजिनस था, जो हमने या तो खुद बनाया था या मेड इन इंडिया था या खुद इंटीग्रेट किया था. सो लॉट ऑफ एफर्ट वाज इंडिजिनस एंड दैट इज व्हाट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड. एंड आई होप दैट दिस पार्ट विल कंटिन्यू tomorrow, or maybe after a couple of years, somebody will clap for me also that AP took some correct decisions and we are on the correct path. Though I'm not sure of that, but I hope that happens. So of course I'm not getting into that, what we struck, how we struck. हमारे को टेररिस्ट टारगेट दिए गए, हमने उनको एक्यूरेटली स्ट्राइक किया. एंड उसके बाद जब हमारे दुश्मनों ने मतलब लड़ाई रोकने की बात नहीं मानी और हमको अटैक करने की कोशिश करी, देन वी स्ट्रक देम नाइस एंड हार्ड. उनके काफी सारे बेसिस को क्षति पहुंची है, बहुत सारे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, उनके हैंगर्स, एयरक्राफ्ट, बहुत सारे उनके नुकसान हुए हैं. एंड इट्स देयर ऑल ओवर ऑन द इंटरनेट एंड इन द
social media also. Now one point I want to bring out, पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो एक बात में बार बार एयरफोर्स को पूछा जाता था, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ये पूछा ज्यादा जाता है, हम अपनों से ज्यादा पूछते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं, तो बार बार पूछा जाता था कि ये तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, जो बालाकोट की पिक्चर है लेफ्ट में, उसमें आप देखिए सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में सिर्फ डॉट्स दिखते थे, छोटे से छेद है जैसे, कुछ नहीं है, और हमारे पास कोई अंदर की इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कैसे बताएं कि अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि कितने लोग मारे गए हैं, कितनी वहां से कितने लोगों का क्रियाक्रम करा गया है, ऑल दैट, बट फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस बारी वो राइट साइड में पिक्चर मुरीदके की है, उसमें भी वैसा ही एक डॉट दिख रहा है बाहर से सैटेलाइट पिक्चर में, लेकिन ये बीच में एक छोटा सा वीडियो लगाया है मैंने, जो बहुत सारे वीडियोस आए हैं ऐसे, किसी एक जर्नलिस्ट ने अंदर जाके इसे कवर करा है, तो जरा प्ले करेंगे प्लीज। देखिए वो जो डॉट है उसके अंदर कैसा हाल हुआ हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है इस बारी कि हम लोग अपने जो हमारे क्रिटिक्स थे, जो हमें बार बार ये पूछा जाता था कि आपके वेपन्स करते क्या हैं, तो जो बाहर से एक छेद दिखाई दे रहा है, ये वेपन जो पेनिट्रेटिंग वेपन है, इसने अंदर जाके ऐसे हाल किया। नाउ कमिंग टू सम लेसन्स लर्न्ड, certain good things that happened. I think one of the best thing that happened was that there was political will. हमारे जो लीडरशिप है हमने हमें क्लियर डायरेक्शंस दी, कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। फुल फ्रीडम वाज गिवन टू अस टू प्लान एंड देयर वाज जॉइंटनेस। ऑल द थ्री सर्विसेज वी वर सिटिंग टुगेदर, डिस्कसिंग टुगेदर, प्लानिंग टुगेदर, along with the CDS, along with other agencies, where NSA was a big part of doing that. So because of this, I think the cohesive effort that came through, I think that was a major lesson that we learned, and that is a major positive that has come out of this operation. Of course, like I told in the beginning, primacy of air power has come to fore. One more point is conflict termination. ये मैंने आई थिंक बैंगलोर में भी ये बात कही थी कि आप देखिए दोनों जो मेन लड़ाइयां चल रही हैं आज तक, वेदर इट इज रशिया यूक्रेन या फिर वो इजराइल वाली लड़ाई जो चल रही है, वो चली जा रही है, सालों साल बीत गए हैं, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बारे में नहीं सोच रहा है कि हमें एक बंद भी करना है। आई थिंक what we have to understand, जो हमारे को भी ऐसा बोला गया था कि भाई फीलिंग्स ऐसी सुनने में आई हैं और लोगों ने भी कहा है कि नहीं और थोड़ा करना चाहिए था, बहुत जल्दी हमने रोक दी लड़ाई। यस, वो बैकफुट में थे, नो डाउट, बट हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिज्म था, उनको स्ट्राइक करना था, वो हम कर चुके थे। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उसके बाद वाई शुड वी नॉट टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, वाई शुड वी कैरी ऑन? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारा प्राइस होता है जो हमें पे करना पड़ेगा। इट विल अफेक्ट आवर प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट वन, इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी, इट विल अफेक्ट द जनरल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज फॉरगेटिंग। उनको यही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या था जब हमने लड़ाई शुरू करी थी। अब वो गोल पोस्ट उनका शिफ्ट होता जा रहा है, ईगोज आर कमिंग इन बिटवीन, एंड दिस इज वेयर आई थिंक वर्ल्ड हैज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडिया, हाउ टू start and terminate a conflict at the earliest possible opportunity. As far as op capability is concerned, the technology played a major part. The weapons that were used were all specialist weapons, long range weapons, guided weapons. They could strike at very long ranges with precision, with minimal collateral damage. आसपास की जगह में डैमेज ना करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया। एंड ये सब टेक्नोलॉजी हमने लास्ट कुछ सालों में एक्वायर करी थी या डेवलप करी थी। सो ये जो टेक्नोलॉजी साइकिल है, इसमें हमें आगे रहना होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे तो अगली बार अगर जब जरूरत आएगी तो हमें शायद सक्सेस ना मिले। तो हमें ये जरूरी है कि हमारी टेक्नोलॉजी में हम
आगे रहें। टेक्नोलॉजी को सिर्फ डेवलप करना ही नहीं, उसको सिर्फ खरीदना या लाना ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब करना है, अपने सिस्टम, अपने प्लान्स में उसको अडेप्ट करना है और अपने आप को उसके साथ अडेप्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। देन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का एंगेजमेंट, आई थिंक जो हमने LR सैम्स, जो लॉन्ग रेंज सैम्स खरीदी थी, जो S-400, दे टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन दिस। उनकी लॉन्ग रेंज, द रडार्स, द मिसाइल सिस्टम कुड थ्रेटन द एनिमी एयरक्राफ्ट वेल इनसाइड देयर ओन टेरिटरी। तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। So this was a game changer. I think we again must thank some people. One of them I can see here, sitting here, who was a pusher. I remember when जब बोला जा रहा था कि इनको हमने फॉरवर्ड डिप्लॉय करना है, मैं खुद थोड़ा असमंजस में था उस समय, एडी कमांडर था कहीं पे कि नहीं ऐसे वेपन्स फॉरवर्ड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। बट ये वेपन सिस्टम फॉरवर्ड डिप्लॉय होके दुश्मन के एरिया में बहुत दूर तक मार करके, और बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोबिलिटी इट कुड शिफ्ट एंड वी कुड बीट द टारगेटिंग साइकिल ऑफ द एनिमी। जो वो एनिमी हमारे वेपन को स्पॉट करता था रडार अपना सैटेलाइट के थ्रू, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट निकाल के अगर वहां वेपन फेंके, उससे पहले हमारा सिस्टम वहां से मूव कर चुका था। तो 2-4 वेपन ऐसी जगह गिरे हैं जहां हमारा सिस्टम पहले था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इस तरह का वेपन सिस्टम हमारे पास था। हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे, लाइक आइडेंटिफिकेशन, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत दूर तक वार करते हो तो आपको एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इस केस में देखा जाए तो उनके जहाज हमारी तरफ नहीं आए, तो उस तरफ जितने जहाज हमें मारने थे वो बॉर्डर या LAC के उस तरफ थे, तो थोड़ा इजी था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने कुछ एयरफील्ड्स को बंद नहीं किया था, एयर स्पेस को क्लोज नहीं किया था। लाहौर के ऊपर उनके सिविल एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर रहे थे। सो अगर हमने उस समय थोड़ी क्या बोलूं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, मुस्तैदी से या उसको सोचा नहीं होता उसके बारे में, मे भी काफी लोगों की जान जा सकती थी। तो ये कुछ चैलेंज जो हमारे पास था, उन एयरक्राफ्ट के ब्लिप्स की आड़ में उन्होंने कुछ अपने UAVs, अपने ड्रोन्स जो है अटैक ड्रोन्स को भी टेक ऑफ कराया है। तो ये सब इनपुट्स हमारे पास आ रही थी, लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी ऐसे जहाज को हम बाई चांस भी क्षति ना पहुंचाएं जिसमें सिविलियंस हैं या कोई और नॉन मिलिट्री पर्सनल है। ड्रोन वॉरफेयर, आई थिंक बहुत बातें हो रही हैं आजकल, हर जगह आप देखिए ड्रोन की बातें हो रही हैं। बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ इस हमारी लड़ाई में भी, ऑफ कोर्स बाकी लड़ाइयों में भी हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रोन्स दे आर वेरी गुड, दे आर गुड टू सैचुरेट अ सिस्टम। बहुत सारे एक साथ आएंगे तो सैचुरेशन होती है, लेकिन अगर हमें लड़ाई जीतनी है सिर्फ ड्रोन से नहीं जीती जा सकती। हमारे पास कुछ लॉन्ग रेंज, कुछ हैवी कैलिबर वेपन्स, कुछ सच एयरक्राफ्ट विच कैन डिलीवर लॉन्ग फायर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, उनका होना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली हमें एक हैप्पी मिक्स चाहिए होगा मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम का। अगर हमें लग रहा है कि ये लड़ाइयों को देख के कि अब बस मैन्ड सिस्टम खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन विल रिमेन इन द लूप, even in this unmanned system actually the human is in the loop, so they are uncrewed, but or maybe physically the man is not getting endangered sitting in the cockpit in these systems, but otherwise they are being operated by the human himself. Of course there are certain usage of technology in terms of going beyond a man's intelligence, that I will be talking about a little later. So ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अब ये अपार्ट फ्रॉम सिंदूर हम जो करते हैं,
इस साल हमने क्या किया, आई थिंक कुछ बातें इसमें से फॉर्मर चीफ ने अभी बताई हैं कि लॉट ऑफ एफर्ट दिस ईयर हैज बीन स्पेशली, गॉड हैज बीन स्पेशली काइंड टू अस. बहुत सारे लैंडस्लाइड, बहुत सारे फ्लड्स, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट. देन देयर आर सम issues with which has happened across the globe also. So a lot of effort has gone in towards retrieving of Indians, supply of human aid, the medical aid to these areas, and also moving the specialists towards these areas. इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. सिंधु म्यांमार में, थाईलैंड में ऑल्सो, और ब्रह्मा जो म्यांमार में हुआ था जिसमें बहुत सारा वहां के लोगों को क्षति हुई थी, तो एनडीआरएफ के लोग भी वहां पे हमने भेजे थे. सिमिलरली विद इन द कंट्री ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दीज नंबर्स, बट देयर आर large enough to tell you that a lot of effort is being put in by Indian Air Force towards this, and we all should be proud of our men and women who are doing this. Also, it's very important that we maintain our presence in the world map in terms of exercises, interacting with them, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से सीखेंगे नहीं, ये God has been specially kind to us. बहुत सारे लैंडस्लाइड, बहुत सारे फ्लड्स, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट. देन देयर आर सम इश्यूज विद which has happened across the globe also. So a lot of effort has gone in towards retrieving of Indians, supply of human aid, the medical aid to these areas, and also moving the specialists towards these areas. इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. सिंधु म्यांमार में, थाईलैंड में ऑल्सो, और ब्रह्मा जो म्यांमार में हुआ था जिसमें बहुत सारा वहां के लोगों को क्षति हुई थी, तो एनडीआरएफ के लोग भी वहां पे हमने भेजे थे. सिमिलरली विद इन द कंट्री ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दीज नंबर्स, बट देयर आर large enough to tell you that a lot of effort is being put in by Indian Air Force towards this, and we all should be proud of our men and women who are doing this. Also, it's very important that we maintain our presence in the world map in terms of exercises, interacting with them, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से सीखेंगे नहीं, ये जरूरी नहीं सिर्फ हमने सीखना है, उन्होंने भी हमसे सीखना है. सो अपने आइडियाज को जब हम शेयर करते हैं, देन वी ग्रो इवन मोर. किसी और के आइडियाज पिकअप करके उनको अपने हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज आर डन विद फॉरेन कंट्रीज. एक लास्ट ईयर हमने जो वो तरंग शक्ति करी थी, विच लास्ट मीटिंग में हमने उसके बारे में कवर किया था, जहां पे ऑलमोस्ट 30 नेशंस हैड कम एंड पार्टिसिपेटेड, विद 11 नेशंस विद their assets. So similarly with there are large number of exercises which we have done with various countries. This map, whatever little you can see, at least पता चल रहा है कहाँ कहाँ हम exercises कर रहे हैं. 84 exercises have been done since 2001, and now it is at the rate of, you can see in 1 year छोटे बड़े मिला के almost 8-10 exercises हो रही हैं. But the general aim is to have between 3 to 4 major exercises with the countries. When I say major, it is that multilateral exercises where you send a full contingent of your own, with sometimes 6 aircraft, sometimes 8 aircraft, sometimes 4 aircraft, and about 100 plus people. Similarly, there are some upcoming exercises which I have listed out here, and ये सब इसी साल में, मैंने ऐसे इसी साल मतलब इस और मे बी आने वाले पूरे एक साल में जो होने वाली है. लास्ट वन इज तरंग शक्ति, विच विल बी अगेन अ लोकल एक्सरसाइज, इंटरनेशनल एक्सरसाइज विच बी हेल्ड हियर नेक्स्ट ईयर sometime in August, September. Now I'll cover a little bit on our future road map. मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा.
Our vision, of course, everybody knows that we have a vision statement for 2047. We have also taken out one document which is not for public domain, but वो हमने document बनाया है कि हम किस तरह से अपने आप को देखते हैं आगे next 20-22 सालों में किस तरह से हम अपने आप को एक we want to transform into a multi-domain capable aerospace power who is capable of course, protecting the interests of our nation and also, to be a credible military instrument of choice across all domains for the government. In all, when I say all domains, across the entire spectrum of conflict. So for this, we made out a document in which we have given out the numbers, the type of weapons, the type of systems, the kind of changes we want to make in our organization structure if required, the manpower structure that we want. So all that has been listed out. उसके बारे में हमने एक पूरी किताब लिख दी है और उसको अभी फॉलो करना है. और हमने ये भी नहीं लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि अब किताब पे पत्थर में लकीर नहीं है, क्योंकि things will change. We have to adapt, like I said, every 4 to 5 years we have to again have a relook. Are we on the correct path, or do we need to change a little bit to remain credible and to remain relevant? So as far as acquisitions are concerned, fighters में आप सबको पता है तेजस 83 तेजस का order already existing है. We are expecting the first deliveries, though it should have happened about almost 2 years back. The first aircraft should have come. December 23 was a promise, but the things are not going in time. But there are promises that it will start flowing in from October onwards. The fingers are crossed. We hope that once the aircraft starts rolling out, then thereafter we'll get a decent continuous supply. Along with that, we've also got clearance to buy almost 100 more LCAs, which the contract will be signed soon. Our commitment towards AMCA and LCA Mark II continues. A lot of effort is being put in by our own teams in designing and developing these aircraft, in giving our ideas, in giving our opinion, taking regular meetings and feedbacks from ADA. And apart from these, there will be requirement to go in for something in quick time. So we are working, in conveying our idea that there can be something make in India in the meanwhile. So that process is on. So till it comes out, in black and white, that idea has been accepted. I don't want to talk about it. We have signed, of course, as far as enablers are concerned, force multipliers are concerned, contracts have been signed for more AEW&C aircraft. It is again a DRDO-led project, so the process has started. Maybe in a few years' time, we'll have more numbers available with us as far as airborne early warning and control aircraft are concerned. We also signed a wet lease for a tanker. The case for buying of more air-to-air refuelers is in the process. As far as trainers are concerned, HTT-40, 70 aircraft have been signed with the HAL, which will add to our current trainers Pilatus, which is of similar class of aircraft, and we should be able to absorb it very efficiently. Transport fleet, we know that C-295 was, the supplies had started. So 16 aircraft we've already received, which were supposed to come in flyaway condition. Now next aircraft will be made in India. The company along with the Tessel is manufacturing it in Baroda, and first aircraft is likely to come in August, September next year, and thereafter we'll have continuous flow between 8 to 12 aircraft per year. For this, of course, the training for aircrew has been completed in almost all roles. They are now fully operational. The simulator has been set up in Agra. We are utilizing the simulator. And helicopter fleet, we are going in for an upgrade of the Mi-17 class of helicopters. That process is on. And also, we are fully committed towards the IMRH project, which the HAL has conceived to replace the medium lift helicopters.
As far as the advanced light helicopters, there was a little issue with its performance in terms of failures of certain critical parts. So that part has been identified. We have procedures in place till we replace that whole system with a new design. We are following a cautious approach of carrying out more frequent maintenance on that system and replacing that system in time. We also have a program for acquiring RPS. The high altitude long endurance HAIL case has already been signed. It is a case for Army, Navy and Air Force. Similarly, the medium altitude RPS are also in the pipeline. Along with what we are signing for new, the existing RPS case has been being progressed to upgrade it to the newer version. We have replaced some old radars of long range which we used to have earlier. Some of you may have operated on them, THDs, with the high power radars of Indian origin and integrated by India rather. And of course, more low level tactical radars are being bought. Now all these radars that we have already been integrated into a integrated command and control system, the IACCS. Along with this, there is integration of Navy, Army radars also. So the picture that we get is an overall fused picture for all the radars that we have. Of course, as far as SCGW is concerned, the surface to air guided weapons, the long range weapons which have proved good, we plan to induct more of them. There is also a similar weapon being developed by DRDO, full support for that Kushas project. Also, there is induction of close-in weapon system and very short-range air-to-air missiles, air defense system, that is VSHORADS, is in the pipeline. Along with that, there are some infrastructure issues. A large number of hardened shelters are being progressed. They are under construction. Many of them have already completed and more are under construction. There are few new airfields which have come up. Of course, they have been coming up for last few years. Of course, DISA was inaugurated some time back and Neoma is almost complete. The trial landings have started and Neoma should be operational maybe in a month or less. Along with that, of course, there are, robust and reliant, self-reliant logistics. We have almost 70,000 spares that have been indigenized. So this progress helps us in, reducing our reliance on various foreign vendors and also helps us in, tiding over the issues of the systems which get old and redundant. Upgrading of schools, upgrading of sports facilities, upgrading of accommodation, all this is an ongoing process and being given adequate push. Now, since people matter the most as far as any organization is concerned, we have taken a lot of steps in last few years. It's not just the last year's progress, but those steps which were taken are being still continued and being improved upon. We have started off with preliminary military education, improving that to making it more modernized. Also, we started a new course called WASP, where people are, the middle-level officers are made into, you can say, strategists. They learn to read a lot of books and understand and develop their own ideas towards strategic thought. Then, of course, there are leadership capsules which are done at various levels. You read the last bullet, junior leaders being empowered. Now, I was there in the Combined Commanders Conference. We had the
the session where everybody was involved, including the warrant officers, JCOs, and even up to Agniveer. So the views were being asked from everybody to speak on certain topics. And I'm very happy to say that the way the Air Force personnel spoke there, whether they were JW or warrant officer or MW, it was very heartening to see somebody put across his or her thought in a very clear and concise manner. I think this is something which we need to improve. Further, I find the confidence level of our junior personnel, especially airmen, is fairly low when it comes to speaking your mind or conveying your thoughts. This is something which maybe it is हमारे यहाँ थोड़ा सा वो right from beginning, right बचपन से हम लोग थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं हर एक को. मम्मी पापा के सामने नहीं बोल पाते.